Hi guys, good morning everyone. Thank you for joining. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, good morning. So guys, today again there is something about the auto. Mahindra has flagged some 5,000 crores cost burden, obviously because of the CAFE norms. So you will see capex rising for this company. Yesterday we were talking about Bajaj, no, the CNG product. I was not knowing whether no, Bajaj also have CNG. So the CNG Bajaj has said that flatters as ecosystem gaps widen. People are not preferring CNG. People are preferring EVs. Yesterday there was something about EVs as well that EVs penetration is at 6% and it was expected to be around 30% by the Niti Aayog. But somehow EVs are also not picking up. But TVS have yesterday launched two new models for EVs. आई एम नॉट श्योर, मैंने सिर्फ वो पोस्ट देखा, मैंने पढ़ा नहीं उसमें क्या था एग्जैक्टली व्हाट इज द प्राइस एंड ऑल। जस्ट से कि जस्ट सी टीवीएस ने दो नए लॉन्च किए। सीएनजी भी आई थिंक उन्होंने लॉन्च किया करने वाले हैं। सो डजंट नो ना हाउ इज दैट, मतलब आई आई डोंट नो एनीवन हैविंग अ सीएनजी स्कूटर या सीएनजी बाइक, पता नहीं कैसे होता है। बिकॉज आई थिंक वो सीएनजी भरना इज अ बिग टास्क, नो, जब तुम बाइक पे हो एंड तुमको क्विकली किधर जाना है। तो थोड़ा एक प्रॉब्लम है वो सीएनजी का ओवरऑल। तो ईवीज काफी बेटर लगते हैं ओवरऑल, क्योंकि ईवीज तुम घर पे ही चार्ज करते हो। ओके, सो टुडे वी हैव दर्शन हु इज प्रेजेंटिंग अबाउट एथर। दर्शन, could you share your screen? Yes, sir, sure. Yeah. Yeah, is my screen visible, sir? One second, it's loading. Yeah, it's visible. Yeah, okay. Good morning, everyone. I'll be presenting Darshan, the would you zoom a bit? Yeah, sure. Is this fine now? Yeah, it's fine. Yes. So, good morning, everyone. I'll be presenting the company profile for Ather Energy. So, Ather Energy is an electrical two-wheeler manufacturing company headquartered in Bangalore and it was founded in 2013 by IIT alumni. Then it got listed in May 2025. So, the business also, along with manufacturing of electric scooters, they sell an AetherStack, a proprietary software platform, and a charging network with smart accessories. So, currently, the company has two manufacturing plants, one in Whitefield, Bengaluru, and Hosur in Tamil Nadu, and third under construction in Sambhajinagar, Maharashtra. Outside India, Ather sells authorized distributors to Nepal and Sri Lanka. So if I talk about them, one second, Darshan. yes, sir. When you talk about the company, now it's been around 20 seconds that you're speaking around this. Okay. Yes. Now, when you say Ather is a two-wheeler electric manufacturer, so my question will come specifically, what type of two-wheelers? Okay, what is the price of the two-wheelers? Headquartered in Bengaluru, fine. So it should be, because what happens, your report should be data point. Whatever you write, if there is no data point in that, because reports are written from a comparison perspective, always. Yes, If you sir, write understood. if you say, okay, sir, I am Darshan Patel, I am this, I am that, I am etc. etc. So comparison किधर? You are good, fine. But what about others? तुम टू व्हीलर Yeah. बेचते हो तो कौन से टू व्हीलर बेचते हो? Which two wheelers are you selling? What is how many products are there in the two wheelers? What is the price of this product? I Because have. as a fund manager, when you say ना, तो मुझे वो क्लिक होना चाहिए कि तुम इधर कंपेयर किसको हो रहा है. Understood, sir. Okay, or else I will say अरे टू व्हीलर बनाते, you are wasting my 10 seconds. ऐसा हो रहा है, 10-15 seconds. Got it, sir. Okay, they are having market share of 30%. मतलब यहाँ तक there is no about the products. देखो ना, पूरे शीट में प्रोडक्ट के बारे में किधर लिखा ही नहीं तुमने. So, मैंने मतलब वो पूरा ऐसा बनाया था पूरा नेक्स्ट शीट पे, that's why. नहीं, वो सिर्फ तो हाँ. see, it is like we have 4 products. जो Yeah. नाम दिए 4 प्रोडक्ट्स है, उसके प्राइसिंग, दैट्स इट. नेक्स्ट पेज पे तुम उसके प्रेजेंटेशन करो कि उसका कॉम्पिटिटर कौन है, क्या है, वो नेक्स्ट पेज पे आएगा. बट व्हेन यू टॉक ठीक है. अबाउट अ कंपनी स्पेसिफिक, कितने प्रोडक्ट्स है, कितने का बिकता है, एंड प्रोबेबली अगर वॉल्यूम्स, तुमको वॉल्यूम्स भी पता है तो वॉल्यूम्स भी लिख दो यहाँ पे. एक लास्ट साल उसने कितना बेचा है. ठीक है, सर. करेक्ट. ठीक है. Sure. Yeah. Well, yes. Yeah, so the market position is around 18.3%, and the currently half of the team sits in the R&D development, so they have around 417 patents. So the company sets on the strategic direction. The two first is there is a premium shift happening in the consumers. The existing people don't want to have a like-to-like replacement, and secondly, they're building proprietary technology rather than relying on the third party. Now coming on to the product portfolio.
So this was the journey so far. So now coming on to the product portfolio, they have two series, that is the 450 series and the Rizza family. So 450 series is for the urban oriented customers who prioritize acceleration, technology, feature and riding excitement. So the price ranges from 1.3 lakhs to 1.95 lakh for Ather 450s to Ather 450 Apex. So, and these are some features with the top speed from 990 km per hour to 100 km per hour. So, if I have to talk about the range is between 122 kilometers to 157 kilometers for Ather S series to Ather Apex series. Then the charging also has the standard charger around 8.5 hours for all the three, with Ather Apex having around grid fast charges. And these are some of the features you can see over here. Now, coming on to the next part, that is the Ather Rizza S series. So, this is for the family oriented urban customers. So Ather Rizza has almost has around the highest boot space in India right now. So the price ranges from 76,000 to 1.64 lakh for Ather Rizza S and Ather Rizza Z. So currently these contribute around 60% of the total financial year 25 volumes. So if I have to talk about, the speed is quite less, but again it has a negative correlation. The range is quite high over here. If you see, the range for the Ather Rizza is 123 kilometers, and for Ather Rizza Z is around 159 kilometers. Again, the charging and the specifications vary depending upon the features and the product. Now, this is just the summary of the products you can see over here. Now, moving on to the AetherStack. So, AetherStack is a in-house proprietary technology which the company has. So, it provides certain features like safety for live location, navigation, and for convenience like auto hold, and some upcoming features like pothole alerts, etc. So it has been growing quite tremendously. So it grows around like 90%. There is an attached rate of AetherStack, and total registrations have been around 72,000. Also, quite unique thing is Ather uses a different kind of battery technology. They have like lithium and phosphate battery chemistry. Why do they use that? Because these cost less per kilowatt compared to the normal nickel magnet cobalt one, and which gives the Ather battery warranty of around 8 years or 80,000 kilometers. And Amar Raja has been their domestic supplier for the LFP batteries. So non-vehicle revenue is also been growing at significant. This contributes around 13 to 14% in the last quarter for Ather. Then, now this is the important slide. Non-vehicle revenue? Yeah, that is around like 14% in the last quarter, sir. No, what is that? What is The that non non-revenue? Yes, the non-vehicle includes the AetherStack Pro subscriptions, the accessories, helmets, riding gear. They have something called Halo Smart Helmet, and also they are recently started the insurance business. So this is one of their non-revenue So system. Darshan, what is the price of it? What is the price of AetherStack Pro subscription? कितने का आता है? How much year it is? How it will grow? 14% आता है, मतलब it is a big amount, no? ये यस, मतलब वो कितने से ग्रो हो रहा है यहाँ पे लिखा है मैंने, बट हाउ मच डज इट कॉस्ट एग्जैक्टली ग्राउंड लेवल में आई डिडंट हैव द प्रॉपर डेटा, तो इसलिए मैंने लिखा नहीं मिल था। जाएगा, मिल जाएगा ना अथर प्रो हाँ को अथर। तुम जाओगे तभी समझ ही जाएगा ना उसमें कि बोर्ड के शोरूम में ना कितने का आता है, क्या आता है। एसेसरीज तो ठीक है, फाइन। वारंटी प्रोग्राम क्या होता है, ऑर्डर चार्जिंग नेटवर्क फीस, बिग पोर्शन ना 15% आता है, मतलब बिगर पोर्शन का। मतलब नहीं, यस सर, वॉल्यूम्स का पे लिखा है, वॉल्यूम्स लिखा है क्या? वॉल्यूम्स मैंने ये क्या है? यहाँ पे लिखा है टोटल सर। डिस्ट्रीब्यूशंस। दिस इज द रजिस्ट्रेशंस, टोटल रजिस्ट्रेशंस मैंने यहाँ पे लिखा है कॉम्पिटिटिव हाँ हाँ। पोजीशन में। So currently, Ather has around 18.4% market share as of Q3 financial year 26. Then the market leader is currently TVS with a market share of 20.3%, followed by Chetak 22.6% and Vida 11.1%, and Ola, which was their close competitor, is nowhere to be seen around 3.5%. So these are the distinct features you can see, the price range, and what exactly is the charging network. So the one of the best part about the Ather is their charging network. They have around 5,000 plus points, which includes Vida too in them, because eventually Hero owns 30% of Ather. And coming to the market share, it has been growing quite good. It has grew around like 2.5x in the last 1 year itself, from 7.6% to 18.8% in the last quarter. And the volume sold in the last quarter were around for 67,851. So there has been a rapid stabilization happening in the volume growth, because quickly you can see in the first quarter of financial year 25 to 26, it was 97%. Then it grew to 67%. Again, it moderated to 50%. So going forward, I would see it would stabilize around certain growth rate rather than growing at a rapid scale.
Then moving on to the distribution network and the geographical expansion. So Ether currently has their experience centers, and service centers. These are asset light. These are mostly sourced to the third party because they want to scale it quickly. That's why you can see they have around 600 experience centers, and they plan to have around 700 by end of quarter. So zonal footprint, South India is their strongest market with market leader with 24% share, followed by Middle India and rest of India. So the total India is around 18% market share approximately, and international presence right now in Nepal and Sri Lanka, but this is just a distributor model with some 5 experience centers in Nepal and 10 in Sri Lanka. Then moving on to the grid technology, as I said, they have around 5,000 plus grid technology, including VIDA chargers. So these are in malls, office parks, apartments. You can find anywhere easily on a Google map. You can just check Ather charger near me. You'll find a lot of tons, especially in tier 1 cities and even in tier 2 cities also. And apart from that, they have 3 manufacturing facilities, two under operational and one under in construction, which has the capacity to produce 1 million units per year, which will be, I think, starting now from financial year 27 in July 2026. Then these are some of the key operational metrics. So in the last 9 months, the total number of vehicles sold were around 1,79,000. The growth was around 66%. And if you see the bifurcation between the sale of vehicles and non-vehicles, it's 87% and 13%. And the revenue per unit of two-wheeler vehicles sold is around 1,27,000. And it's still a loss-making company. I won't say that. It's on the way to its path to profitability. That's how I would like to put it. Then these are the financials for the last few quarters and 9 months. And it's still a loss-making company at net loss of around 846 million. Now, coming to the future plan, Ether wants to the path to the profitability by a reduction of around 1,600 basis points in the per quarter. That's what the management said. And with the volume target, Ether is planning with around factory 3.0 and 700 planned by financial year 26. So Ether should be able to scale towards 3 lakh to 4 lakh units per year in financial year 27. And they want to also focus on increasing their monetization AetherStack and non-vehicle revenue target like insurance and accessory distributions. So also an interesting take, they have a platform called EL platform, which was announced. So which would focus on, it is the next generation Ether platform, which would focus on reducing the manufacturing cost and manufacturing primarily out of factory 3.0 and expands Ether's addressable market beyond just the premium segment to two-wheeler market and positioning Ether into a very well defined in the EV space and with the factory 3.2 with an annual capacity of 1 million. So they were able to scale around 3 lakhs to 4 lakh units per year. So that's all for now, sir. Fine, fair enough. Rajat, thoda presentation is not up to the mark. Okay. And as I said, na, you always use dark color. ये थोड़ा light color लग रहा है. It looks a very light color. Always use Okay. dark blue colors. मतलब वो ठीक है. the reason is हाँ. And ये right पे क्यों रखा है तुमने? अच्छा. क्यों रखा है right पे? मार्जिन यहाँ से Margin हाँ. Why is on the मतलब right side? मैं पहले ऐसे ही फॉलो कर रहा था Here, पुराने से आदत है सर वो because पुराने left कंपनी पे से. it is like see कैसा होता है whenever you read something it is हम्म एकदम it doesn't seem like क्योंकि हम read ऐसा करते हैं हम ऐसा उल्टा read नहीं करते. हम्म It's always your eyes goes from left to right. ये बहुत कम कंपनीज करते हैं ऐसा. यूजुअली लेफ्ट से ही बात करते हैं. इट इज ह्यूमन टेंडेंसी टू रीड फ्रॉम लेफ्ट. हम राइट से नहीं रीड करते. ओके. अच्छा और ये देखो मैंने मैंने मेरे जो मेरा जो रिपोर्ट्स है उसमें कैसे की है. क्योंकि क्या है व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग समथिंग व्हाई इज Q3 पहले आया. कंपनी प्रेजेंट करो तो Q3 की बात क्यों कर रहे हो. एनुअल की बात होती है हमेशा. सर मतलब वो अभी एक ही साल है उसके पास कोई डेटा नहीं है मतलब रिसेंटली लिस्ट हुआ है बस ना. एक साल तो हो गया. एक साल तो हुआ है ना. हाँ. KRHP तो हो गया ना आपका. हाँ. यस यस. इट इज ऑलवेज द फुल ईयर. क्योंकि क्वार्टरली तो कुछ समझ नहीं आ रहा है. क्वार्टरली तो मुझे 50% पहली बात तो तुम कंपनी समझ रहे हो तो क्वार्टरली की बात नहीं करते. ओके. ओके क्वार्टर हैज नथिंग टू डू विद द फुल ईयर. एक साल ये सितंबर ये तुम बोल रहे हो दिसंबर क्वार्टर. दिसंबर क्वार्टर में ऑलरेडी तुम्हारा सीजन होता है. वेडिंग सीजन और ये सब तो सेल्स अच्छे ही होने वाले हैं. तो यू कैनॉट ठीक है. प्रूव एनीथिंग फ्रॉम दिस डेटा. टोटल इनकम टोटल लॉस. लॉस का तो कुछ मतलब नहीं. तुमको EBITDA मार्जिन की बात करनी. लॉस की बता रहे हो. ठीक है सर.
इसको करता हूँ रेक्टिफाई। और ओके। फिर हाँ, ये जो मार्केट कैप है, डेट क्यों चाहिए बीच में, कैश क्यों चाहिए, क्या करूँ ये सब चीज़ों का एज अ इन्वेस्टर, ये सब चीज़ों क्या क्या फर्क पड़ने वाला है मुझे। आई मार्केट मीन कैप ठीक है, सुनो ना, मार्केट कैप है, उसका नंबर कोड आता है, एमएससी कोड आता है, कितने वॉल्यूम्स होते हैं, 52 एक फाइल होती है, ये तो मैंने लिखा है 52। देखो ना मेरे मैंने रिपोर्ट कैसा बना है। द रीजन इज एवरीवन इन द इंडस्ट्री वांट्स द प्रेजेंटेशन टू बी अप टू द मार्क। कि लिखा तो वैसे भी यू हैव टू चेंज इट, कि वो हर बार एक ट्रायल में हो, ये भी रह गया, वो रह गया, ये हो गया, वो हो गया। द ठीक फ्रंट है। पेज मेक्स ना मेक्स। और ये निफ्टी होता है, ऐसा कैसे आया ये, इधर कैसे होता है, कौन सा? मुझे बता देना कैसे करना है, क्योंकि इट नहीं शुड सर, स्टार्ट फ्रॉम हियर ना, दोनों स्टार्ट आना चाहिए। पे क्या है, ये फाइल में कंपैरिजन ही किधर है, कुछ उसमें कंपैरिजन। yes sir, this is a mistake I think, yes, because I took निफ्टी का अलग डेटा में भी आया, this is mistake sir, I agree। ये मई से स्टार्ट हो रहा था या तो एवरीथिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर है ना, ये से ही दोनों समझना चाहिए बेस निफ्टी में। और का क्या हुआ है। हाँ। यस, हाँ ये वाला गलती है सर, दिस अच्छा, एंड इट शुड ऑलवेज बी कंपनी, और इसमें ये कंपनी और यू नो इट शुड बी। हाँ, मैंने तुमको बताया कि सब पहले इसमें ही सब आना चाहिए। ओके। अच्छा, मार्केट पोजीशन ठीक है, ये लिखते हैं आई वुड ऑलवेज अज्यूम टू हैव हेडिंग व्हेनेवर यू हम्म। स्टार्ट समथिंग, अगर मिलता है तो। ओके। अभी तक हेडिंग मंथ। मार्केट शेयर ऑफ 18.3% एज ऑफ अच्छा, तो टोटल वॉल्यूम सोल्ड सी, पहले मार्केट शेयर से क्यों, फर्स्ट इट शुड ऑलवेज टॉक अबाउट ईयरली नंबर्स। ईयरली से जाके तुम अभी आ जाए, जैसे FY 26 में, सॉरी FY 25 में इसका मार्केट शेयर इतना था, अभी एफ हम्म। क्यू थ्री में इतना हो गया। इज ऑलवेज द सेकंड पार्ट, नेवर स्टार्ट विद क्वार्टरली। ठीक है सर। क्योंकि क्वार्टरली अपडेट नहीं है, कंपनी समझा रहे हैं मुझे। बिल्कुल ठीक सर। है। या अच्छा, और जब भी अगर डालते हो मार्केट शेयर का डेटा, तो ऑब्वियसली आई विल एक्सपेक्ट पहले कितना था अभी कितना हो गया, तो इधर ही चार्ट डाल दो ना नीचे, मार्केट शेयर पहले कितना था अभी कितना हो गया। ठीक है सर, आई अंडरस्टूड। तो फर्स्ट करेक्ट, पेज शुड बी द करेक्ट। समरी ऑफ द होल रिपोर्ट काइंड ऑफ, सो इट शुड समरी ऑफ द इंक्लूड। होल, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारा फर्स्ट पेज ही पढ़ने वाला हूँ, उसके बाद मैं नहीं कुछ पढ़ने वाला हूँ। उसके बाद मैं तुमको पूछने वाला हूँ, जैसे ऐसा बताओ ये जो, फिर आता हम्म। है प्रोडक्ट प्रोडक्ट बाइफरकेशन। ये जो तुमने बता किया है, प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर्स कौन है, कितने के आते हैं प्रोडक्ट, तो फिर तुम फोटो के साथ बताओ ओके, क्या हो अंडरस्टूड। रहा है, कितने वॉल्यूम्स, और वॉल्यूम्स अगर एक शायद से मेरे को इसके भी तो तुमको मंथली नंबर्स वाइज तो मिलेंगे ना, हाँ हाँ मंथली बिल्कुल नंबर्स तो सर। मिलेंगे सबके, तो यस उस पे यस। ऑटो पंडित से मिलते ही है ना, तो वो हाँ क्यों नहीं डाला तुमने, कितने प्रोडक्ट्स कितने बिके आपके तो साथ मैंने, में उसके कॉम्पिटिटर्स। हाँ यहाँ पे मैंने नीचे डाला था, बट यस आई शुड हैव इंक्लूडेड यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे नहीं, सेकंड पेज पे जब तुम जाते हो you know, तो हर एक सब वॉल्यूम ये तो तुमने बता दिया, ठीक है, दिस इज हाँ अप्रिशिएटेड, ये अच्छा किया तुमने जो भी तुमने किया है। हाँ। यस। हाँ, फिर उसके बाद इसके सेल्स कितने हुए टोटल तीनों के, कितना ग्रोथ कितना हुआ, वो तुम्हारा नेक्स्ट पेज पे आना चाहिए, वॉल्यूम्स ओके, मतलब के, देर इज वॉल्यूम्स नो कितने हैं तीनों के। बाइफो, हाँ समझ गया, बाइफर्केशन नहीं दिए सर वो लोग 450 एस और 450 जेड में। ये जो इस पे बट मिलता है ना, ऑटो पंडिट्स पे, ऑटो ओके पंडिट्स ओके। में है ना, हाँ ठीक बाइफरकेट है, नहीं मैं, है ना ऑटो पंडिट्स पे, हाँ मैंने कंपनी फाइलिंग्स में देख रहा था, है ठीक ना, है, अंडरस्टूड। तो डेटा है ही ना, यस यस, गॉट देख इट। लेना एक बार, आई थिंक ऑटो पंडिट में तो है ना, ऑटो पंडिट तो आता ही है हर हाँ महीने। हाँ हाँ सर, समझ गया। हाँ, see always presentation is always in data points, if there is हम्म। no data points, presentation will like a story, and as I know, the first 10, 15 seconds or 20 seconds of your PPT is very important, कि गॉट इट मुझे सर। इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं। मुझे अगर 10 सेकंड में या लेकिन हाफ हाफ मिनट्स में अगर मुझे कंपनी नहीं समझा, हम्म। तो प्रॉब्ली आई एम नॉट लुकिंग, आई माई इंटरेस्ट विल गो, गॉट इट सर। फिर मैं आई विल स्टॉप यू इन बिटवीन, कि अरे छोड़ यार क्या पका रहे हो, ऐसा होता है, लिटरली ऐसा होता है, मतलब सी व्हेन यू टॉक विद अ वन मैनेजर हु इज लाइक 15, 20 years यंग एल्डर टू यू, हम्म। तो यू कैन नॉट जस्ट कीप ऑन प्रेजेंटिंग एज अ फ्रेशर, उसको नंबर्स में बात करो, क्योंकि वो नंबर्स कैसे ना, व्हेनेवर यू टॉक अबाउट नंबर्स, आंख खुल हम्म। जाती है कि अरे इतना हो गया है, इतना ग्रो हुआ हम्म। है, हम्म। ऐसा है। एंड फिर मैं ही सामने से तुमको पूछूंगा, अरे दरअसल इसका फर्क बताओ क्या है, ऐसा आना हम्म। चाहिए। व्हेनेवर यू गिव प्रेजेंटेशन, सामने से आंसर आना, क्वेश्चन आना चाहिए कि यार इसके बारे में बताओ, उसके हम्म। बारे में बताओ। If तुम even if you are addressing a crowd, and if questions are not coming, then हम्म। probably you are not explaining in a proper way, या फिर people are not interested। गॉट इट सर। Okay, ये ऐसा होता है।
एंड ऑलवेज इम्प्रूव योर वॉइस इन बिटवीन। कि मैं सो रहा था, लेट्स से मैं ना अभी तुम बता रहे थे ना, तो आई जस्ट टुक, मेरा फोन दूसरी जगह पे था, मैं लेने गया। हम्म ऑब्वियसली ईयरफोन्स पे था मैं। सो यस इफ यू आर सेट सम डेटा पॉइंट, या फिर नो इंक्रीज योर वॉइस, मेरा क्विकली ध्यान जाता भले मैं फोन लेने जा रहा था। ओके, ठीक यस तो सर ये ऐसा ऐसा तुम्हारा वॉइस बढ़ना चाहिए एक टाइम पे। स्ट्रेस ऑन दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो तुमको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है बताने को, कि ये एक्सेप्शनल चीज हुआ है इसमें कंपनी में। ठीक है ऐसा सर है। जरूर हाँ, सर okay। यस ये लेफ्ट राइट का चेंज करो, ये यस कलर सर का डार्क करो। दिस कलर डजंट लुक, देखो नीचे आओ, ये देखो आपस, ये कलर की अलग अलग है, डजंट लुक गुड। ओके कलर यूज करना। ठीक है सर cool। ग्रोथ ऐसा क्यों डिक्लाइन हुआ है ये? यहाँ पे मतलब क्वार्टर फोर नहीं है ना सर, अभी तक रिजल्ट नहीं है। ये देख सकते हैं ना, वॉल्यूम सोल्ड तो ईयर ऑन ईयर होता है ना, ये तुमने क्या क्यों ऑन क्यों दिया है? ईयर ऑन ईयर। हाँ हम हाँ मतलब ईयर ऑन ईयर ही है, फाइनेंशियल 24 और 26 है सर। ये लाइन कैसे आया है? ये मतलब पहले 97% था, तो बस नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट क्वार्टर ग्रोथ 67% हुआ, फिर 50%। मार्केट शेयर इसका है ना, कंपनी का ना? हाँ कंपनी का टोटल। कंपनी का है तो इस कंपेरेटिव प्राइसिंग में फिर कंपनी कंपनी का है तो 18.4 है, यहाँ पे 18.8 है, इसका ही है। हाँ वो ही है। तो यस सर अंडरस्टूड। ये तो मेक अ कंपेरेटिव फॉर कंपेटिटिव पोजीशनिंग ना, तो सबके तुमको मार्केट शेयर हाँ दिया ना। ओला के हम्म इतने तुमने बता दिया मुझे ऑलरेडी, ठीक है, तो ये हम्म जो चीज है ना, वो पहले ही आनी हम्म चाहिए तुम्हारी व्हेन यू टॉक अबाउट मार्केट शेयर। ठीक है सर। यू शुड नेवर गो, जब बात करते ना कोई चीज का 18% है तो हिस्टोरिकल कितना है, बस वो हम्म क्विकली वहां पे ही खत्म कर देना चाहिए। ओके कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग है तो कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग में, हाँ, तो ओला का कितना था, टीवीएस का कितना था, बजाज का कितना था, हिस्टोरिकली पता है तो बताओ। फिर डिक्लाइन हुआ है, बढ़ गया है, ठीक है बजाज का फिर सर। डिक्लाइन हुआ है, हीरो का भी डिक्लाइन हुआ है, तो तुम बोल सकते हो ना कि सर इसका ऐसा ऐसा, जैसे यू हैव डन कि समझते हो सर, यू कैन से दैट सर इसका कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, इसकी वजह से अतर का मार्केट शेयर बढ़ रहा है, इसके प्रोडक्ट हम्म महंगे आते हैं, अतर के प्रोडक्ट कंपेरेटिव सस्ते आते हैं, हम्म कनेक्टिविटी इशू है इसका अच्छा है। सो ये तुम यहाँ पे दिखा सकते हो कि ये लोग का मार्केट शेयर कैसे बढ़ा है, कम हुआ है। एंड यू कैन ऑल्सो से सर देयर इज अ थ्रेट ऑफ टीवीएस, टीवीएस इज अ ह्यूज कॉम्पिटिटर फॉर एथर। हम्म तो तुम्हारी कंपनी समझ के ही प्रेजेंट करना कि हम्म तुमको ये मुझे कंपनी बेचना है। यस सर श्योर। यू हैव टू मेक श्योर दैट आई इन्वेस्ट इन दैट कंपनी, तो तुम जितने भी पॉजिटिव चीजें हैं सब तुमको बतानी है, और कॉम्पिटिटर्स को नीचे बताना है कि कॉम्पिटिटर्स में क्या फर्क है और मेरे में क्या फर्क है। व्हाई शुड आई बाय एथर एंड व्हाई शुड आई, हम किसको टारगेट कर रहे हैं, विच कैटेगरी वी आर टारगेटिंग। ओके सर। जैसे तुमने वो ऊपर भी बोला था कि सर वो लो रेंज के थे और इसके बाद हाई रेंज, मतलब हम्म भले प्राइस कम है बट फिर बैटरी क्या स्पीड कम है रेस बट स्पीड रेंज कम है ज्यादा है, या रेंज ज्यादा है, हाँ। या तो वो भी है, इट इज ऑल्सो पार्ट ना, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर केवल कंप्लीट क्या पोजीशन बोलते हैं केपीआईस, हाँ, या कॉम्पिटिटिव पोजीशन, यस, की परफॉर्मिंग इंडिकेटर तो सब है तुम्हारे। तो पूरा गॉट इट। तुमको एक व्हेन यू राइट एनी रिपोर्ट, इट हम्म शुड बी लाइक, तुमको मुझे चार चीजें क्या बतानी है तो सबसे हम्म इंपॉर्टेंट, हम्म which will lead to increase in value. And then other things will come as a supporting documents for it. अंडरस्टूड सर। So always report with company क्या करती है, प्रोडक्ट क्या है, तुमको क्यों अच्छी लगी, and then you try to present। श्योर सर डेफिनेटली बनाया अच्छा है, आई वैसे बनाया अच्छा है, नो डाउट इन दैट, बट वो बोलते हैं मतलब फॉर्मेट होता है, हम्म क्या चाहिए होता है, व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम एन एनालिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। इंटरव्यू में बोलते वक्त तुमको ना ये सब याद नहीं रहना चाहिए फिर, एज इन हम्म तुमने अभी प्रेजेंट किया, तुमने इतना इतना पढ़ना है, यू शुड हैव टू गो थ्रू द पीपीटी या तुम्हारा वर्ड फाइल, या क्योंकि हर एक डेटा पॉइंट बताना नहीं है। हम्म सो रात को मैं तुमको 12 बजे भी उठाऊँ दर्शन, मुझे बता सर क्या करता है, तुमको सब पता होना चाहिए। ये कब यस पता सर होगा, वो जब तुम्हारे पास वो फर्स्ट पेज ही बहुत ज्यादा इट इज इट, डेटा मतलब है। पहले पेज में ही सब डेटा आ जाएगा तुमको फिर वापस देखने की जरूरत ही नहीं। तो समझ गया जैसे मैं सर। बोलूँ दर्शन कल इंटरव्यू है, जैसे ये आधे घंटे में इंटरव्यू है, तुम कितने रिपोर्ट वापस पढ़ोगे, जैसे तुमने 4 कंपनी पे बना है, हम्म इज लाइक दैट। ओके सर। फ्रंट या पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू के लिए भी और खुद के लिए यस सर भी। श्योर।
Yes, sir. अच्छा, इफ Sure. आई वांट टू चलो सम अप देन क्या कर सकते हैं? चलो वापस बताओ, फ्रंट पेज शिफ्ट तुम्हारे हिसाब से बताओ, इधर क्या करते हैं? Yeah. टू So व्हीलर Ather, में, इलेक्ट्रिक में, हाँ। yeah, premium e-two-wheeler segment. Ather operates in premium e-two-wheeler segment. So apart from just manufacturing of e-two-wheeler, they have their own proprietary technology, AetherStack, and they have their own grid technology, Ather Grid, and they have been gaining the market share quite tremendously from नहीं, तो 7%. नहीं, फिर नाउ दे Uh, हैव प्रोडक्ट्स, दे हैव 4 प्रोडक्ट्स, yeah, नहीं 5 okay. है ना, सॉरी, दे हैव 5 प्रोडक्ट्स। Yeah, so mainly they नाम have बताओ two. उसके, 5 प्रोडक्ट्स। Yeah, mainly they have two variants, that the 450 series and the Rizza family. So 450 is for the urban scooter, and Rizza family is for the family-oriented scooter. So they have three variants in 450 and two in Rizza. So the price ranges from 76,000 to 1,60,000, but for 450 series and the Rizza family. And उसके बाद should I tell the market position, sir? नहीं, सो अभी कैसा है, अभी कैसा है, जब ईवी की हाँ बात आती है, एक तो प्राइस आता है, दूसरा क्या हाँ आता है, उसका रेंज। दैट इज अ ओके मेजर पार्ट। ठीक है। अभी मुझे उसके साइज उसके लेना देना नहीं, बैटरी का कितना साइज है, ये कितना साइज है, वो कितना साइज है, हाँ, उसका रेंज कितना है, 1 लाख में ओके मुझे, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन तुम जाते तो ये पूछना है रेंज कितना है। सही है राइट, हाँ, तो रेंज कितना है उसका? Okay. So the range for the 450s to Apex varies between 122 kilometer to 157, and contrary for the family-oriented Rizza series is between since the speed is low, so the range is quite high from 123 kilometers to 160 kilometers. And the battery level charging आगे बैटरी के बारे में बताओ ना सर, कितना है बैकअप? नहीं, फिर वो स्पीड, फिर बैटरी के बारे में, बैटरी कितना कितना किलोवाट का है, या अंडरस्टूड. फिर अगर चलो ये नहीं बताना है तो ठीक है, बैटरी का इतना यूजुअली जरूरत नहीं होती, तुमने लिखा है, फाइन है। तो हम्म. अभी इतना ये 130 किलोमीटर धीरे, तुमने क्या बोला, इट इज बिकॉज ऑफ द लो स्पीड। Yes. तो स्पीड कितना है? कंप्लीट ना, Yeah. तुम्हारे तुम्हारे ही क्वेश्चंस को, तुम्हारे ही आंसर्स को तुम उसको ऐड करते जाओ, स्पीड कितना है उसका। Yes सर, समझ गया. या फिर मैं मार्केट पोजीशन के बारे में बताऊंगा, फिर हाँ, कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स कौन से हैं, राइट? फिर या और उसने कितना बेचा है, फिर अभी कैसे क्या बोल सकते हैं, अभी हम क्या करते हैं, तुम्हारी है ना, तुम्हारी अर्थ की तरह है। हाँ हाँ हमने सर इतने लास्ट लास्ट 2 साल में हमने इतने बाइक बेचे, ठीक है. 25 में इतना बेचा था, इतने बेचा, इतने बेचा, इतने हमने बेचे। अभी हमारा मार्केट शेयर स्टैंड 18%। लास्ट ईयर जैसे क्यू क्यू FY 25 में एक्स अमाउंट था, अभी इतना बढ़ गया हमारा। ठीक है, तुमको ओके. पॉजिटिव बातें बतानी, बढ़ गया। ठीक है, समझ गया सर. ये हो गया। या ठीक. फिर उसके बाद अभी हमारे कॉम्पिटिटर, सर कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, तो अच्छा, फिर इसका फ्यूचर, फ्यूचर में क्या हो रहा है? सर हम ओके. लोग, हमारे 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है, मैन्युफैक्चरिंग हम्म. प्लांट में हम इतना कैपेसिटी है, हम इतना कैपेसिटी हम एक्सपांड कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे ठीक है. हैं। फिर हम एक्सपांड कर रहे हैं, तो एक्सपांड क्यों होगा तुम्हारा? तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ऐसा ऐसा चीजों की वजह से, फिर सॉरी, फिर आएगा कॉम्पिटिटर्स, कि हमारे हम्म. कॉम्पिटिटर्स है, कॉम्पिटिटर्स में ये प्रॉब्लम्स है, हमारा प्रोडक्ट ऐसा लाइन होता है, वैसा लाइन होता है। ठीक है सर. तो फ्यूचर प्लान में फर्स्ट पेज में इंक्लूड कर दोगे एक दो लाइन? फ्यूचर प्लान नहीं, अभी के लिए नहीं, ठीक है. फ्यूचर प्लान बाद में आएगा, ओके. कि क्या क्या करते हो कंपनी प्रोफाइल में, तुम क्या क्या करते हो, वो इन्वेस्टमेंट थीसिस में आता है एक्चुअली, आधा फर्स्ट पेज पे ही हम्म. होता है, बट इट इज हम्म. एंटायरली फॉर इन्वेस्टमेंट थीसिस, कि तुमको स्टार्ट ही वैसा करते हैं कि सर मुझे एथर क्यों अच्छा लगता है। बट अभी सिंस हम सिर्फ क्योंकि तुमने मॉडल नहीं बनाया, तुमने हाँ. कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं पढ़े हैं, तो अभी तुमको सिर्फ हम्म. कंपनी प्रेजेंट कर रहे हो। यस. तो अभी सिर्फ कंपनी बताओ अभी के लिए, और फ्यूचर प्लान से बताओ कि फ्यूचर में क्या करने वाले हो। वो एंड में, जब तुम बोलोगे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, एक्सपांशन हो रहा है, तो फ्यूचर प्लान भी हम्म. क्या बेसिस पे होगा? एक्सपांशन बेस्ड। गॉट इट सर. गॉट इट। यस सर. कर दूंगा सर मैं इसको रेक्टिफाई हाँ, चेंजेस. रेक्टिफाई कर लो, yes। श्योर. थैंक यू. या शांतनु। Yes, sir. Good morning, sir. Today I will be present news about Bajaj Freedom 125, the world first CNG bike, and its market performance. The bike peaked around 12,000 units in November 2024, but fell sharply by 87% to about 1,500 units in February 2026. A 63% year-on-year decline, despite 17% growth in Bajaj total two-wheeler volumes. Since launch, total sales around 85,000 units, contributing just 2% of volume, while EV contributing 12%, showing a faster adoption of a electric vehicle.
The company had targeted 14,000 units per month by March 2025, but actual volumes remained below 4,000 units, indicating a significant gap. The slowdown is mainly due to ecosystem challenges like low CNG pump density, inconsistency refueling pressures, partial fillings, long queues, and limited range around 200 kilometer on CNG and 130 kilometer on petrol, which leads user to switch back to petrol. While running cost is 0.76 rupees per kilometer in Delhi, and saving dropped to about 0.36 rupees per kilometer in cities like Noida, Dehradun, due to a higher CNG prices and inconsistency refueling. The bike price is at 91,566 and faced competition from petrol bikes as well as affordable EV offering better economics, range, and policy supports. Other concerns include limited models, resale uncertainty, safety perceptions, and weak features designs. Also, demand is a concern with around 60% of sales coming from five states in that Maharashtra, Gujarat, Uttar Pradesh, Delhi, Haryana. It's limiting pan-India scalability. To address this, Bajaj is focusing on high CNG density states, fixing refueling issues, and targeting heavy users while gradually building a ecosystem. As per my research, while the CNG offers cost efficiency, but weak infrastructure limits adoption. Near-term growth may remain slow, but in a long term depends on a CNG expansion with the overall limited impact on Bajaj due to a diversified portfolio. Thank you, sir. Okay. Okay. So guys, I was reading it somewhere in the newspaper that because of this increase in crude pricing and the petrol costs will increase, expected to increase in the coming years. So उसमें ना, I think कुछ 1 crore per day will be impacted for the gig workers. So abhi they are expecting if the IPL starts, the quick commerce will boom as of now. Quick commerce and your e-commerce is expected to boom. तो उसमें क्या हो रहा है? Since the pricing is increasing, petrol price will increase. It will lead to an increase in cost of 1 crore per day. So that is why it is also expected that the shift will come to the two wheelers. ऐसा न्यूज आर्टिकल मैंने पढ़ा था, आई एम नॉट श्योर कहाँ पे पढ़ा, मैंने कोई तो न्यूज़पेपर में पढ़ा। तो ये चीज हो रही है, तो उसमें सीएनजी का भी पा रहा है, बट सीएनजी के अपने ही इश्यूज है, एज राइटली मेंशन इन दिस, कि रीफ्यूलिंग का बड़ा इशू है। दैट इज अ प्रॉब्लम इन सीएनजी। तो बजाज इज डूइंग समथिंग। एंड ये कितने का आता है शांतनु, ये बाइक? एनी आइडिया शांतनु, एनी आइडिया व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस? 91,000 सर। 91,000 एक शोरूम? हाँ, एक शोरूम। Okay, Viraj, is there? Viraj, anything in the cafe now? Sorry, Karthik can be here. Karthik, anything on the cafe now? Yeah, good morning, sir. So can I start? Yeah, we can. Yeah. Yes. So yeah, good morning, sir, and everyone. So India has proposed CAFE 3 norms, which is expected to come in FY 2025, which will be tighten the fleet level emission standards, which will be directly affecting Mahindra and Mahindra with a potential of 5,000 crore penalty because of their they are SUV heavy and diesel led portfolio. Overall, Mahindra is trying to switching towards EV in order to risk, in order to reduce this penalty. Whereas when it comes to Mahindra sales snapshot, they have recorded a sales of 60K in February 2026 with a growth of 19% year-on-year basis. And when it comes to month-on-month, it is 5.5%, whereas 93 to 95% portfolio comes from ICE, in which there is a majority of vehicles which are led by diesel only.
but only like 5 to 7% comes from EV. So like they are like developing the portfolio, but still there is an issue in that. Regarding this gap, Mahindra is planning to increase their portfolio as well as EV volumes by 2 to 3K in the next year, like FY 2027, as well as if they have to compete with these norms, like there will be no penalty. They have to reach 6.5x increase in the volume of EV in 6 years. Also, like Mahindra has also recently planning to increase their prices uh, by April 1st. So they will be transferring some of the penalty cost to the consumer as well as also like this norms switching companies and pushing companies to do acceleration in EV penetration and increase EV. So Mahindra is like planning to increase their portfolio in EV in order to like just reduce this penalty. Yeah, that's from my side. Okay, so ये क्या है? I think it is the assigned value of emission value of 32.32 grams, while the super grade is set as 3. It is Uh, accounted as 3 vehicles in the fleet calculation. अच्छा, yes, sir. तो okay, पता नहीं fine. कि किस तरह से करेंगे कि like they are planning to triple EV volumes in 2 years and Yeah, 6.5x in the next 6 years. 6 years. Yes. And if I have to put certain data, so the EV to charger ratio is 135:1. So for every one car, it's around for every 135 car, एक ही charger available है. And they are saying कि EV से no doubt we will give you super credits under CAFE norms so that you can also gain जो भी ICE vehicles के अंदर आएगा उसको compensate हो जाएगा. But I have no idea how will the government and the companies will go ahead. Also, strange, looks strange कि क्या होगा. But I think let's see what happens because this is Mahindra तो EV में ही फोकस कर रहा है. They are hardly into उनके क्योंकि मेजरली डीजल पोर्टफोलियो ही है उनका. उनके पास पेट्रोल है नहीं, इसलिए उनको तो बड़ा प्रॉब्लम है. एंड आई थिंक दे हैव प्लान फॉर दिस. उनको ईवी ही बेचने में इंटरेस्ट है. दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन आई थिंक सेलिंग द आइस वेरिएंट. वो सिर्फ क्या है मार्केट में रखा है जस्ट टू लोगों के लिए. तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट दिखता है उस पर ऐसा टाइप से. प्रॉबली फ्यूचर में वी कैन सी दैट महिंद्रा ये पॉसिबल. क्या वी हैव टू सी कि इतना गाड़ी ले भी रहे हैं क्या लोग. महिंद्रा के अभी डेटा देखोगे ओवरऑल इट इज द सेकंड प्लेयर. थर्ड है. थर्ड It है is third. ईवी में. Third. इज थर्ड ना. सेकंड इज आई थिंक Yeah. विंसर. हाँ, Yeah. First is Tata Motors, then सेकंड इज MG, एमजी. and हाँ, then there is Mahindra and Mahindra. Also, sir, it looks like government is only pushing EVs. Companies are like forced to do these things. जैसे जैसे सर गवर्नमेंट ही Negative. पुश कर रहा है कि आप ईवी पेनिट्रेशन करो, पॉल्यूशन कम हो, कार्बन एमिशन कम हो, और लाइक हाँ, कंपनीज को फोर्सफुली उसके लिए करना पड़ रहा है. फिर उसके बाद ईवी करना मॉडल्स पड़ता है. हाँ, प्रेजेंट कर रहे हैं. लाइक इन मिड अब हैचबैक्स को भी ले लो, सबको ले लो, सब में यही हो रहा है. Like they are like last week there was news like around 85 they are like Mahindra and Mahindra is planning to expand their capacity to 85K for EVs. या बट ईवी का तो है फ्यूचर भी. कैसा है ना, आई विल से महिंद्रा हैज क्रैक्ड द कोड ऑफ ईवी जो टाटा नहीं कर पा रहा है, मारुति भी नहीं कर पा रहा है. मतलब वो जिनको गाड़ियां बेच रहा है ना, मतलब 30 लाख की गाड़ी अगर तुम ले रहे हो, वो भी तुम्हारी सेकंड कार होगी, तो ऑब्वियसली अज्यूम ना तुम तो पैसे वाले ही होंगे, तुम्हारे घर पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ही. विद द प्रॉब्लम इज अबाउट द लोअर वेरिएंट. मतलब तुम अगर एक मिडिल क्लास आदमी हो तो हाउ कैन यू अफोर्ड एन ईवी. एंड अगर ईवी अफोर्ड भी करोगे तो ईवी में क्या है, तुमको चार्जिंग की तरह तुम्हें पार्किंग का जगह नहीं है. Where will you charge the car? तो ये इशू तो महिंद्रा हैज क्रैक्ड द कोड. बट फोर्स तो कर रहे हैं, बट समहाउ गवर्नमेंट हैज टू बैक अप एट सम पॉइंट. पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं. टू व्हीलर नहीं हो रहा है, थ्री व्हीलर कहाँ से होगा, फोर व्हीलर कहाँ से होगा. टू व्हीलर का ही हमने देख लिया. तो लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर में. आई थिंक नथिंग टू कमेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम. कैफे नॉर्म्स, यस इट्स अ प्रॉब्लम. तो कंपनीज को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा ही फ्यूचर में जाके. ओके. सर एक डाउट था इस न्यूज में. जैसे हाँ, लाइक द पेनल्टी ऑफ विच दे आर टॉकिंग अबाउट.
सो वो पेनल्टी बचाने के चक्कर में, मतलब ना लगे इस चक्कर में, उनका ये प्लान होना चाहिए, मतलब उसकी वजह से फिर पेनल्टी नहीं पड़ेगा, ऐसा ऐसा प्लान है सर। लाइक मुझे लगता है वो ऐसा प्लान उनका नहीं है, लेकिन वो पेनल्टी बचाने के लिए ये करना पड़ेगा, ऐसा स्टेटमेंट है शायद सर। तो अभी हाँ, वही है कि ये होगा, ये अनरियल, इसीलिए तो ये अनरियलिस्टिक लग रहा है sir, ये कंडेंस से जो भी करना, बता यस, रहे करेक्ट। Yes, sir. That is the point I was like wanted to highlight that Shivraj had said. He, it sounds forceful that they are doing expansion in EVs because of cafe norms. Nothing to debate on now. So you're fine. I think we cannot predict anything as of now. Let's see what happens. अभी के लिए तो यार it's an sign for the company, for the entire automobile industry. Okay. I think yeah, anyone else? तो ये Harsh, एकदम yeah, से please. अगर करने लगेंगे ईवी पे फोकस, तो फ्री कैश फ्लो तो इवेंचुअली नेगेटिव होगा ना सर सारे कंपनीज का, फिर कंपनी से हाँ, होगा ही। यस, इस पे तो अभी काफी हाई कैपेक्स हो, हाई राइट। कैपेक्स हो इस पे तो। तो अगर एक कंपनी का रेप्लिकेट करेगा तो सारे ऑटोमोबाइल्स ऑलमोस्ट वही करेंगे हाँ, रेप्लिकेट, और गवर्नमेंट पुश कर रही है तो। Sir, I had one more thing to add. या सर ये जो नीति आयोग का जो ये आ रहा है ना, तो ये लोग बीईवी को बहुत फोकस कर रहे हैं अगेंस्ट दिस प्लग इन एंड हाइब्रिड व्हीकल्स। मगर फिर भी ना जो प्राइवेट प्लेयर्स है ना, दे आर एंटिसिपेटिंग कि हाइब्रिड कार्स का और प्लग इन्स का मार्केट अवेलेबल होगा। होगा, हाँ। ये हाँ, तो और उसमें भी। आई एम बेटिंग ऑन दिस फ्रॉम लास्ट सो मेनी इयर्स, सो मेनी हाँ, मतलब मंथ्स, इयर्स। नहीं, बट दर्शन बोल रहा था कि पर ईवी अवेलेबल नहीं, पर ईवी चार्जर अवेलेबल नहीं है, बट उन जो 29,000 स्टेशन है ना, उसका यूटिलाइजेशन 5% के अंडर ही है। ऐसा भी है, हाँ 29,000 स्टेशन है इंडिया में, हाँ फंक्शनल है हाँ क्या है। वो? 29,000 है, और टाटा मोटर्स 4 लाख स्टेशन लाने वाला है। उसमें से 500 मेगा स्टेशन आने वाला है, ये शेल कंपनी के साथ और बहुत सारे पार्टनर के साथ कर रहा है। और महिंद्रा जो है वो कुछ कितना 24,000 कुछ तो ला रहा था, हाँ 24,000 फ्यूल स्टेशन ला रहा है एचपी सेल के साथ। और करंटली 5,400 एचपी के अंडर ऑलरेडी है। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, लेट्स लेट्स बी ऑन द ग्राउंड लेवल। इतने चार्जिंग है तो तुम जैसे जा रहे हो, वेरी यू स्टे साइड, और पनवेल। तुम देखिए पनवेल से मतलब घूमने जा रहे हो बाहर, एंड तुम 2-3 घंटा है क्या तुम्हारे पास रुकने को ऑन द वे, हाँ, नहीं तो है। चार्जिंग के लिए? हाँ, फिर हम्म। वो लोग बोलते हैं क्या कि तुम खाना खाने रुको तब 2-3 घंटा करो, एग्री। कोई तो फिर उसके लिए होटल में चाहिए, करेक्ट। तुमको अगर एक हाईवे पे है, जैसे हाईवे पे चार्जिंग स्टेशन, तुम रुकोगे क्या हाईवे पे 2 घंटा? नहीं, बस मुझे क्या चार्ज करें। करना है, ये ग्राउंड रियलिटी है। हाँ, अभी ये चार्जिंग स्टेशन जो हो रहा है, इट इज फॉर इंटरसिटी ट्रैवल्स। इंटरसिटी तुम जा रहे हो, जैसे पुणे मुंबई जा रहे हो, उधर क्या से है, तो भी देखो पुणे मुंबई आने को लगता है 3-4 घंटा। आई कम फ्रॉम पुणे मुंबई, इट टेक्स अराउंड 4 आवर्स टू रीच मुंबई। एक चार्ज में 300 किलोमीटर की रेंज होती है, ठीक है, तो आई नो आई कैन नॉट गो बैक 200 किलोमीटर इज मुंबई फ्रॉम, तो आई हैव टू वेट फॉर 2 आवर्स, और भी फास्ट चार्जिंग, ठीक है। एंड फास्ट चार्जिंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर दिस कार, कि जितना तुम फास्ट चार्ज करोगे उतनी भी बैटरी की ये क्या लाइफ कम हो जाती है उसकी। तो अभी बैटरी कैपेसिटी होने के बावजूद भी आई एम नॉट श्योर ये हाउ इज दिस वर्क आउट, ऐसा है। तो इट इज नेवर नॉट टू टॉक ऑन दिस पार्ट अभी के लिए, ऐसा है। तो लेट्स नॉट टॉक मच ऑन दिस, कुछ है नहीं इसका अभी तक। ओके, सर, तो हम लोग शिवराज, हाइब्रिड वाले केस में फोकस सारे कर लोग सकते हैं क्या? हाइब्रिड वाले में। एक सेकंड ना।
Yeah, sorry. The industry is moving towards plug-in hybrids. So plug-in hybrids, yeah, maybe hybrid cars are the one which is the future of EVs. ईवी में अगर जाना है तो प्लग इन हाइब्रिड या फिर तुम्हारा ये ईवी ही, सॉरी, हाइब्रिड ही काम आने वाला है। प्लग इन हाइब्रिड पता है, वो जेएसडब्ल्यू है, दे हैव टोल्ड दैट दे विल ब्रिंग वन PHEV, प्लग इन हाइब्रिड ईवी इन इंडिया। अब उसका रेंज कम होता है काफी, बट प्लग इन का थोड़ा टेक्नोलॉजी थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे है, मतलब 20-25 लाख के ऊपर ही गाड़ी आती है। बट हाइब्रिड इज व्हाट मारुति इज ऑल्सो डूइंग। 6-7 उसके लाइंड अप है प्रोडक्ट हाइब्रिड में। अभी जस्ट दे आर वेटिंग कि हाइब्रिड कार्स के ना वो जीएसटी वीएसटी कम हो जाए, क्योंकि ये ईवीज तो डजंट मेक सेंस। बोल तो रहे हैं। तो क्या ईवी का एक ऑल्टरनेटिव तब तक जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनता इंडिया में। देखो यूएस में अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन चुका है, लेकिन इंडिया में बनेगा। ग्राउंड लेवल पे तो नहीं लगता। मारुति का स्विफ्ट यूएस भी में ईवी हाइब्रिड सेल्स में आने डन है। वाला यस, है। एवरीथिंग सब बोलो। हाँ, सब वैगनआर, स्विफ्ट, बलेनो, फ्रॉन्क्स, ऑल आर कमिंग इनटू हाइब्रिड। ब्रांड विटारा वगैरह इवन भी आ रहा होंडा ने भी बोला है, कि दे विल कम इनटू हाइब्रिड कार्स। है। मारुति इज हाँ, द फर्स्ट मूवर अगेन। मारुति विल बी द फर्स्ट वन कि स्मॉल हैचबैक में हाइब्रिड लेके आए, बट आई थिंक दे आर नाउ वेटिंग ऑन द कॉस्ट साइड। तो ये कैफे नॉर्म्स सब बोल रहे हैं ना, ये कैफे नॉर्म्स, तो हाइब्रिड का ऐसा कुछ होगा कि हाइब्रिड में ठीक है, वैसे भी पोल्यूशन कम होता है, तो कैफे नॉर्म्स ऐसे ही हो जाएंगे, सॉर्ट आउट हो जाएंगे। डोंट नो व्हाट हैपेंस, मतलब जितना भी मैंने देखा है, मारुति को इंडियन गवर्नमेंट बहुत दे बैक देम अप। अभी हाँ, सब बहुत प्रॉब्लम फेवर। हो रहा है टाटा। हाँ, बहुत बहुत बैक करता है। आई एम नॉट श्योर व्हाई इज दैट, क्योंकि काफी साल से है इंडिया में, काफी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, तो मारुति को हमेशा गवर्नमेंट बैक होता है। मारुति इज ऑलवेज वन स्टेप अहेड। देखो ना, वरना तुम Yeah. सोचो, मारुति बीइंग द लार्जेस्ट प्लेयर इन इंडिया, वो लोग ने अभी तक एक ईवी लॉन्च नहीं किया है। ईवी इज देयर इन इंडिया सिंस लास्ट 2015-16 से आ रही है। मारुति की एक ईवी प्रोडक्ट नहीं है इतने टाइम में। क्यों? ऐसा क्यों है? अभी एक लाया हो। हाँ, अभी सिर्फ एक ई विटार आया, उसमें भी बैटरी है, तो सैस है, और एक ही मॉडल है उसमें। तो हाइब्रिड्स के कार्स में फोकस करो, नथिंग एल्स। या नहीं, या Yes, sir. Sir, if you scroll up now, my news will be on the right side. On page 6, sir. On page ठीक है, 6. Okay. इनको ऐड ना। Good morning, everybody. Here is my today's news. Retail sales growth at 9% year on year in February 2026. Growth in retail sales slowed down from 11% in August October 2025 and 10% in November December 2025 to 9% in February 2026. This indicates a return to normal demand levels post festive season. Region wise, West and East regions reported 10% growth, followed by North region at 9% and South region, which reported 8% growth in retail sales. Apparel category reported highest growth rate of 12%, followed by food and grocery category at 11% and footwear at 10% in Feb 2026. Furniture, QSR, and jewelry categories grew at 9% in Feb 2026. Retail growth indicates strong consumer demand despite global uncertainties. However, higher fuel prices, logistics cost, and inflation are emerging as a concern. Listed players in retail sector: Avenue Supermarts in grocery, Metro in footwear, Reliance Retail in grocery and apparel, Aditya Birla Fashion in apparel, and Shoppers Stop in premium apparel. Thank you. प्रॉपर स्टॉप इन कीने होते हैं, और आदित्य बिरला इज लॉस मेकिंग कंपनी। यू सेड वन ग्रोसरी, अच्छा, एवेन्यू, मेट्रो, हाँ मेट्रो रिटेल, रिलायंस रिटेल इज नॉट लिस्टेड ना। Okay. बाटा भी है, बाटा भी है इससे। अच्छा गाइस, हाँ ये रिटेल का ना, आई विल जस्ट नाउ रिसेंटली आई विजिटेड अ मॉल, ठीक है। वो वीकेंड तो यूजुअली एक महीने में एक बार मैं जाता हूँ, जस्ट टू हैव लुक आउट की इंडस्ट्री में हो क्या रहा है।
यस, अपैरल इज डूइंग गुड, डेफिनेटली। इंडिया के पास बहुत पैसा है। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है? अपैरल में एनीवन विल से व्हाट इज द प्रॉब्लम विद लिस्टेड कंपनीज? क्या प्रॉब्लम है अपैरल में फ्रॉम अ ग्रोथ पर्सपेक्टिव? हाई कंपटीशन, अनलिस्टेड प्लेयर्स। करेक्ट। तुम जाते हो मॉल में, काफी सारे प्लेयर्स होते हैं। तुम ऐसा स्पेसिफिक हो गया मॉल में जाके कोई स्पेसिफिक ब्रांड का ही लेते हो? है क्या ऐसा? कोई बता, सोचो, जस्ट इमेजिन। तो तुमको फॉर्मल लेना है, कोई स्पेसिफिक ब्रांड के जाके जाके लेते हो तुम? नो। व्हाट अबाउट रेमंड? Raymond, yes. When it comes When to formal and suiting, it yes. comes to formal, when it comes to formal, we specifically try that brand. अभी ब्लैकबेरी भी एक है, बट somehow एलन सोली मैंने देखा, बाकी ना कोई फॉर्मल में कोई ब्रांड है नहीं ऐसा। एंड रेमंड्स आर आल्सो कमिंग अप इनटू, वो कलर प्लस आया है उसका, कैजुअल क्लोथिंग एंड ये सब आया है, तो दैट्स फाइन। मतलब अगर चाहे तुम फॉर्मल लेने जाते हो तो वही शॉप में तुमको कैजुअल भी मिलते हैं, माइट प्रोबेबली यू माइट बाय। बट द फॉर्मल डिमांड इन इंडिया, जैसे जैसे कॉर्पोरेट बढ़ रहे हैं, तो फॉर्मल डिमांड्स तो बढ़ रहे हैं इंडिया में, एंड रेमंड इज एक्सपांडिंग इट्स फ्लीट इनटू वेरियस प्रोडक्ट्स। तो ये अपैरल्स में मुझे पर्सनली आई लाइक रेमंड। पर्सनली मतलब डे टू डे लाइफ में, डे टू डे लाइफ पर्सन, नॉट एज अ स्टॉक, डे टू डे लाइफ में आई प्रेफर रेमंड ओवर अदर ब्रांड्स। ऑब्वियसली बिकॉज द क्वालिटी इज गुड। उसके पास हर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है, प्रीमियम का भी आता है, सस्ता भी आता है, डिपेंडिंग ऑन मॉडल। तो ये मुझे कंपनी अपैरल में, नया तो हमने लिखा तो है, बट अपैरल में स्पेसिफिकली रेमंड इज वन विच इज गुड। बाकी सब है वो गोकुलदास एक्सपोर्ट, वो सब है जो उसके रॉ मटेरियल बनाते हैं। बट आई लाइक दिस सेगमेंट बिकॉज एवरी टाइम यू गो, इंडिया में क्या है, जब तुम्हारे पास पैसा आता है तो यू गो इन शॉप। एग्री? घूमने जाने तो शॉपिंग करते हो, सबसे ज्यादा शॉपिंग क्या करते हो? फूड एंड ग्रोसरीज तो Clothes. है ही। क्लोथ्स, फुटवेयर लेते हो बार बार जाके? No. नहीं, फुटवेयर इतना नहीं लेते हैं। हाँ, अपैरल्स लेते हैं, बोथ मेन एंड वुमेन। स्पोर्ट्स Uh, गुड, दिस इज इम्प्रूविंग। स्पोर्ट्स गुड में भी काफी सब कंपनीज आ रहे हैं, एस्थेटिक, बिकॉज पीपल आर बिकमिंग मोर हेल्थ कॉन्शियस। तो स्पोर्ट्स गुड्स में भी थोड़ा बहुत ग्रोथ आ रहा है, बट दिस इज नो लिस्टेड प्लेयर इन दिस। क्यूएसआर एक तो है। क्यूएसआर में अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम, व्हाट आई रियलाइज दैट, आई वाज ट्रैकिंग बारबेक्यू नेशंस एंड वो एशिया किचन जो है ना, आई वाज ट्रैकिंग दैट ऑन अ वेरी क्लोजली बेसिस। व्हाट आई रियलाइज दैट एक एशिया किचन का ग्रोथ करना है, बताओ कैसे ग्रो होगा? इफ यू आर अ रिटेल प्लेयर, तुम्हारा एशिया किचन तुम्हारा ब्रांड है, तुमको ग्रो करना है, हाउ यू सपोज टू ग्रो? मतलब फ्रैंचाइजी लेकर, आउटलेट लेकर. फ्रेंचाइजी लेके, आउटलेट लेकर, एंड तुम या जैसे एक्सपांड करते करते हो, सब जैसे एक मॉल में, हर एक मॉल में तुम्हारा एक एशिया किचन का एक है, एक शॉप है, सब फुल होंगे। नो, ऑक्यूपेंसी नहीं रहेगी, उतनी नहीं रहेगी. एंड तुमको पता है व्हाट आई रियलाइज इट, जितने ज्यादा तुम्हारे स्टोर्स होंगे ना एक छोटे से एरिया में, उतने ज्यादा खाली होंगे। क्योंकि तुम बोलोगे अरे सर ये मॉल में भी है, वो मॉल में भी है, मेरे घर के बाजू में भी है, सब चलते हैं क्या कभी? इतना कोई नहीं डिमांड नहीं. होता है? एंड आर द क्यूएसआर मेकिंग समथिंग डिफरेंट जो काफी नहीं मिलता? जैसे फ्राइड राइस हो गया या चाइनीज आइटम्स है, ऐसा है कैसे उधर ही मिलता है? नो, देयर इज नो मोट एग्जैक्टली. दैट इज द मोट, एग्जैक्टली। तो ये यही क्यूएसआर का, वो मैं हमेशा बात करता हूँ ना मोट का, कि तुम्हारा बिजनेस दूसरों से अलग कैसा है। ग्रो तो होगा, मतलब ठीक है, तुम 100 करोड़ कमा रहे हो, 100 करोड़ का कमाओगे, शायद से कभी कम होगा, कभी थोड़ा ज्यादा होगा, डिपेंडिंग ऑन द ऑक्यूपेंसी। बट ग्रोथ कहाँ पे है? 100 का 200 करोड़ होने को देयर इज अ प्रॉब्लम। अपेरल वाया लाइक, क्योंकि पीपल माइट बाय फोर, एक पीपल एक, मतलब वो डिपेंड ऑन द मनी कि तुम्हारे पास कितना पैसा है। फूड पे वैसा नहीं है, तुम्हारे पास कितने भी पैसा हो, दो फ्राइड राइस की डिशेस खाओगे क्या? बहुत पैसा है मेरे पास, तुम्हारा डाइट उतना ही खाने वाले हो तुम, उससे ज्यादा खाने वाले हो नहीं, तुम्हारे पास कितने भी पैसे हो। तो ये मुझे लगा कि क्यूएसआर में ये प्रॉब्लम है, स्पोर्ट्स को, बाकी फुटवेयर में ये प्रॉब्लम है। तुम्हारे पास बहुत पैसा, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि तुम 10-12 पैर ले लो, कुछ काम ही नहीं है उस चीजों का। शौक के लिए तुम लेते हो, और obviously शौक के लिए तुम बाटा के शूज नहीं लोगे। एग्री? तुमको शूज का बहुत शौक है, तो तुमने बाटा के 4-5 शूज ले लिए। नहीं नहीं. यू विल बाय मच प्रीमियम ब्रांड है ना, नाइकी हो गया, एडिडास हो गया, वॉट एवर। Yes, sir.
तो इसमें अपैरल्स में थिंक ना इंडियन इंडियन में आई थिंक अरविंद फैशंस वो एक लीडिंग टेक्सटाइल प्लेयर है जो हाँ, टेक्सटाइल प्लेयर, यस। सो अरविंद में क्या है, आई वॉज अ बिग फैन ऑफ अरविंद। अरविंद के हम्म 3 मेजर शॉप्स है, विच आर यूएस पोलो, फ्लाइंग मशीन एंड एरो। ओके। यस तो मैं हम्म जब भी मॉल में जाने का ना, एक तो मैं एरो की शर्ट लेने का, फॉर्मल, या हम्म आई यूज्ड टू बाय यूएस पोलो की टी शर्ट्स। हम्म उस दिन क्या हुआ, मैं गया तो मेरे पास 3-4 टी शर्ट्स थे, एंड दैट वाज लाइक कॉस्टिंग 3 to 4 thousand रुपीज। वो हम्म 3,500 का एक था, आई स्टिल रिमेम्बर। एक महीने में खराब हो गया। एक हम्म महीने में खराब हो गया। आई टोल्ड हिम कि मैं ये मशीन में भी नहीं डालता हूँ, मैं ये धोता भी नहीं हूँ, आई जस्ट वो रिंस करता हूँ, मैं डालता हूँ। हाउ इट हम्म इज पॉसिबल कि ये खराब हो गया इतने 3,500 का? नहीं सर, क्वालिटी खराब होगा, ये होगा वो होगा। तो आई गॉट इट चेंज्ड। वापस वो भी शर्ट खराब हो गया, फेड हो गया इनफैक्ट। आई सेड दैट्स इट, आई एम सेलिंग ऑल माय अरविंद फैशन। फ्लाइंग मशीन चलता नहीं है उनका। फ्लाइंग मशीन क्या है, किसी के पास जीन्स, फ्लाइंग मशीन और लिवाइस, व्हाट डू यू प्रेफर? लेविस सर आप, रीडेक्स या एनी टाइम इट इज लिवाइस। या क्वालिटी इज डिफरेंट। एंड जीन्स में तुम देखोगे तो ये आदित्य बिरला ये सब वैसे भी आ ही रहे वो रेंज में, उनके कोई 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 ट्रू ब्रांड्स है ये। तो फ्लाइंग एंड मशीन इज नॉट डूइंग गुड क्योंकि सस्ता वाला है वो ब्रांड। हम्म एंड बचा अभी एरो। एरो इज गुड। अच्छा, मैं एरो इसके लिए बाय करने हैं बिकॉज ऋतिक रोशन वाज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर दैट, एंड आई वाज अ बिग फैन ऑफ ऋतिक रोशन, दैट इज व्हाई आई हैव टू गो एंड बाय द एरो शर्ट। और बाद में पता चला कि ठीक है, मतलब रेमंड इज स्टिल बेटर फ्रॉम अ फॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू। ब्लैकबेरी इज ग्रोइंग एट अ गुड पेस। ब्लैकबेरी अगर तुमने देखा होगा तो उस दिन अभिषेक था, जो एनालिस्ट ना आईसीआईसीआई में, ही कॉल्ड मी एंड सेड, सर अरविंद फैशन ले लो, बढ़ने वाला है। मतलब ऐसे, हम्म लुक प्रोस्पेक्ट लुक गुड। आई सेड फाइन, यू माइट बी, बट मुझे नहीं अच्छा लगता है। मैंने जो रिसर्च किया है, आई एम नॉट लाइकिंग अरविंद फैशन। मुझे वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, तो ठीक है तुम, आई माइट बी रॉन्ग, बट मुझे नहीं चाहिए, आई विल फोकस ऑन रेमंड। तो ऐसा मेरा आजकल रिसर्च पर्सपेक्टिव हो गया है। तो ये मैंने काफी ज्यादा वे में जाके, मतलब अपैरल्स, जो मॉल में हम जाते हैं, हर कोई मॉल में जाता है, तो मैं यही करता हूँ मॉल में जा जाके। आई स्पेंड मनी ऑन शर्ट्स एंड टी शर्ट्स, बट रिसर्च के लिए अभी कितने सारे तो शर्ट्स है मेरे पास जो ऐसे पड़े, मैंने यूज ही नहीं किए, बट मैंने वो रेमंड लिए वो चक्कर में। आई हैव सोल्ड अरविंद कि नहीं चाहिए मुझे। मेट्रो के थे, मेट्रो और बाटा में मैंने ये देखा कि वो मोट नहीं है। मेट्रो के शूज लो, बाटा के शूज लो, वन एंड द सेम। मैंने फाउंड कि वुडलैंड के शूज आते हैं, वुडलैंड इज मच बेटर देन दिस टू ब्रांड्स। बाटा तो ठीक है, बाटा कम्स एट द लोअर सेगमेंट एज वेल। मेट्रो के सब शूज महंगे आते हैं। और ना, मैंने उस दिन गया, 1,500 रुपए का उसने मुझे मोजे दिए, मोजे आई थिंक जैसे था वो, क्रॉक्स क्रॉक्स नहीं, क्रॉक्स तो है, हाँ क्रॉक्स तो 6-7 हजार के हर्ष आते हैं उसके, वो तो नहीं वेस्ट है। हर्ष पपीज के सॉक्स महंगे आते हैं सर सॉक्स महंगे आते हैं, यस। हर्ष पपीज तो काफी छोटा है ब्रांड कंपेयर टू मेट्रो जो है। मतलब बाटा के यस शोरूम में जाओ ना, तो हर्ष पपीज के तुमको हार्डली 3-4 प्रोडक्ट्स दिखते हैं, तुमको ज्यादा नहीं दिखते। वो मेजरली बाटा इज इनटू सेलिंग मास सेगमेंट। या मेट्रो बाटा क्या है, मेट्रो के हर 3-4 हजार से शूज चालू होते हैं, सब उसके वही रेंज के शूज है। सो वो जो हम शादियों में पहनते हैं ना, शेरवानी के नीचे जो शूज रहता है उसको मोजरी बोलते हैं। हम्म दैट दैट उसने मुझे 3,000 का बोला, वो 3,000 का है। व्हाट, व्हाट इज दिस ना, 3,000 का तुम बेच रहे हो, विच हैज नो क्वालिटी। सिर्फ दिखता तो वैसे सेम है, तुम 1,000 रुपए का लो या 3,000 रुपए का लो। एंड इंडिया इज अ मार्केट लाइक, तुम कितने बार पहनते हो, कितने शादी अटेंड करते हो साल में? एक, दो, पांच? तो तुम 5 बार ही वो पहनने वाले हो। डू यू थिंक इन अ कंट्री लाइक इंडिया विच इज सो प्राइस सेंसिटिव, 3,000 का लेगा वो 5 दिन पहनने के लिए? नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। तो मैंने भी वो रीजन की वजह से मैंने वो नहीं, इनको पहनना एक दिन में, एक शादी है मेरे घर पे, दो होंगे ज्यादा से ज्यादा। एंड फिर कैसा होता है पता है ना, वो खराब हो जाता है थोड़े टाइम बाद। तो तुम जब भी नई शादी होता है, तुम नए लेने जाते हो, तो इट लाइक 1,000 रुपीज में आता है। कल से 3,000 के एक लेने से अच्छा मैं 3,000 के 3 अलग अलग ले लूँ, मेरे आउटफिट पे तो जाएंगे। तो ये है व्हाट आई फाउंड इन मेट्रो। नंबर्स ठीक है, नंबर है, तो आई सोल्ड ऑल ऑफ माई स्टॉक्स ऑन बाटा, मेट्रो। ये क्यूएसआर में था। आई रियलाइज कि इसमें मोटी नहीं है कुछ। अभी ग्रोथ कैसे होगा, साइकिल टर्न होगा तो। एक साइकिल टर्न हो गया, ये अचानक से लोगों के पास पैसा आ गया, या ना प्रोडक्ट्स, अचानक से एक्सपांशन हो गया। अपैरल्स से, हाँ, ये मैं ध्यान रखता हूँ अपैरल्स पे कि लोग ज्यादा खर्चा करते हैं कपड़ों पे। आई कैन गो रॉन्ग ऑन दैट, ये मेरा पर्सपेक्टिव था।
तो मैं सब स्टॉक यही पर्सपेक्टिव से रीड करता हूँ कि मोड क्या है, ये दूसरे से अलग क्यों है। कभी रास्ते पे मेरा ध्यान अतर पे ही होता है, इतर पे ही होता है, कौन सा ईवी दिख रहा है और कौन सा इतर का है। तो सब मॉडल्स मेरे ऐसे दिमाग में फिट हो गए कि चार पांच उसके जो मॉडल्स है कैसे दिखते हैं वो, आई शुड आइडेंटिफाई ना रास्ते पे दिख के कि एथर का है। और बाकी भी जो दूसरे कंपनीज के उसके भी मॉडल्स को मैंने ऐसा मेमोराइज कर लिया है कि हाँ ये मॉडल किसका है। सो ये मेरा पर्सपेक्टिव था ऑफ डूइंग रिसर्च, ऐसा मैं करता हूँ। एंड फिर वो नंबर्स में मैं बात करता हूँ। फिर अभी मेरे पास नंबर्स नहीं तो आई डोंट टॉक अबाउट एथर, पर जब नंबर्स आएंगे तो आई विल ऑब्वियसली टॉक अबाउट नंबर्स कि ऐसा ऐसा है, ये फर्क है। रेमंड का भी मैं तुमको प्राइस क्या बता सकता हूँ, कितने के शर्ट्स आते हैं, क्या फर्क है शर्ट्स में। अब जैसे मैंने ब्लैकबेरी का बोला, सेम यू से आई टॉक्ड अबाउट प्राइस। यूएस पोलो का मैंने प्राइस की बात की, फ्लाइंग मशीन की भी प्राइस की बात की कि सस्ते आते हैं कंपेयर टू लिवाइस। एरो वाज इन द नॉर्मल सेंस, दो दो 3 हज़ार के आते हैं। भाई मुझे क्यों पता है ये सब? इज बिकॉज आई एम अ फाइनेंस ग्रेजुएट। No, research, ground level research. ग्राउंड लेवल, दिस इज व्हाट यू डू। फिर ये चक्कर में व्हाट हैपेंस, अभी ये जो मैंने तुमको रिसर्च बोला ना, इज इट पेटेंटेड? ऐसा है कि सिर्फ मेरे को ही पता है? हो सकता है। नहीं, अच्छा, एंड ऐसा भी हो सकता है किधर लिखा हुआ है ये सब चीजें? no, इफ इट्स नॉट रिटन तो कहना से ये मेरा ही रिसर्च है। yeah, जब व्हेन यू गो टू इंटरव्यूज तो समझो जिस हाँ, मैं इमेजिन व्हेन यू गो फॉर एन इंटरव्यू एंड तुम अगर बैलेंस शीट पीएनएल कैश फ्लोज की बातें करोगे तो कहना से ये तो सबके लिए कॉमन है, सबको पता है। बिल्कुल, बिल्कुल, एंड द वन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू 20 इयर्स एक्सपीरियंस है, उसको तुम सिखाओगे बैलेंस शीट पीएनएल क्या होता है, रेशियोज क्या होता है। तो ये नहीं होता, दिस इज अ वेरी रॉन्ग पर्सपेक्टिव इन इंटरव्यूज। तुम सामने वाले को उसके डेन पे जाके कम्पीट कर ही नहीं सकते विच ऑलरेडी हैज एन एक्सपीरियंस। तुम अपना रिसर्च बताओ, सर मैंने ये किया है, आपने शायद से नहीं किया होगा, हो सकता है ना उन्होंने ऐसा रिसर्च नहीं किया है ग्राउंड लेवल पे जाके, तुम्हारा था। तो ये होता है द पर्सपेक्टिव ऑफ क्रैकिंग इंटरव्यूज इज दिस इक्विटी रिसर्च रूल्स विद डेटा पॉइंट्स। हाँ विद डेटा पॉइंट्स, बिना डेटा पॉइंट्स के तो वो भी नहीं सुनेगा, फिर बोलेगा "ये बकवास कर रहा है तू, ऐसे ही कुछ भी स्टोरी सिर्फ रहा है मुझे ऐसा"। शिवराज या शिवराज? Yes, sir. So my newsletter is around the uh, domestic leisure traveling. So domestic leisure travel gaining momentum with Udaipur seeing a 69% year-on-year rise in flight bookings. So according to the travel platform Ixigo, there is a shift in domestic tourist preferences towards Asian destinations like Vietnam, Nepal, Thailand, and domestic leisure destinations. So from earlier traditional strong destination in West Asia due to flight disruptions and airspace constraints in the region. So the rising flight bookings for domestic leisure destinations on coming summer holiday season, including Udaipur with 69% year-on-year rise, Jodhpur with 47% year-on-year, Bagdogra with 44%, Srinagar with 41%, and Agartala with the 38%. So which will benefit the hotel industries in that particular region. So rising flight bookings are a leading indicator for hotel occupancy and average room rate. So going to specific locations mentioned in the news. So talking about the Udaipur, so there IHCL has two major properties with ARR of around 55,000 to 85,000, and another property with 28,000 to 45,000. And also EIH Oberoi Group has uh, one resort, one Uday Villas. So with 87 Ks, with peak season ARR around 90,000 to 1,10,000. And also they have one more property, Trident Udaipur, which caters the relatively lower scale, lower segment with 142 keys and having ARR with 12,000 to 18,000. And also in Udaipur, another property from Leela Palace with 80 keys with the ARR of 42,000 to 60,000 range. So talking about the Jodhpur, there IHCL has 93 keys with 3 suites, and EIH also has the resort property Raj Villas,
And talking about the Bagdogra, so there IHCL has the two properties, which with including the spa facilities also. So both properties have ARR around 30,000 to 50,000. And after that, the Srinagar. So again, Srinagar has the two properties from IHCL, the Taj Dalview under Vivanta brand and Ginger Srinagar. So talking about the Vivanta brand, ARR around 18,000 to 30,000. It's a quite huge range. And the Ginger around 5,000 to 8,000 ARR. And talking lastly with Agartala leisure destination. So relatively, it is under penetrated by the early state players. So currently, IHCL has a mid-scale segment hotel, Ginger, with 60 Ks and around ARR with 4,000 to 700. And also the Taj Pushpabanta Palace is under pipeline there. So overall, talking about these above five destination leisure destinations in the news. So IHCL is the only listed player with the presence across all five destinations, and EI has the most gain per key in Udaipur, given that Oberoi Uday Villas unmatched average room revenue. So that's all from my side. Am I audible? Sorry, Sorry. is it anything else that uh, why is the increasing? Sorry, why is there a high booking in Udaipur and this cities? Any specific reason apart from holiday season? Generally, traditionally, Udaipur is always considered as a best leisure destination, and also that traditional way that there are a lot of tourists going to Dubai and then Saudi Arabia, like West Right. Asia region. So that crowd is shifting towards Asian countries, South Asian countries particularly, and some crowd is shifting towards the domestic leisure destination also on the occasion of the summer holidays. So that's why the shift is. Okay. Okay. Fine. No, I was saying that because Leela Palace is one who is having a highest Leela and EIH. ये दोनों का ना Yes, वो sir. सिटी में काफी वैसे होल्ड है या काफी कीज उसके है EIH के तुमने लिखा है ना कितने EIH के EIH के लिखा है इधर, राजविलास हाँ. दो तीन है EIH का EIH स्पेसिफिकली वो राजस्थान फोकस ही है तीन चार उसके प्रॉपर्टीज है लीला के ना पैलेसेस है वहाँ पे मेजर Yes, IHCL sir. का हाँ IHCL का सब जगह ही है इट इज एंटायर इंडिया में वो तो है ही इट इज द कंपटीशन बट अगर छोटे में बात किया तो EIH एंड लीला इज देयर इन दैट बागडोगरा में भी है लीला का Yes, sir. And Bagdogra is the gateway for this Sikkim, Gangtok, and सिक्किम region of गैंगटॉक हाँ Assam. सॉरी बागडोगरा सॉरी दैट वाज अ डिफरेंट That airport, sir. वन या So IHL to hey, IHL to it is a player which is present everywhere in India. अभी now we have to find a second player कि दूसरा उसको compete करने वाला कौन? So here we are talking about only Udaipur and Jodhpur cities in particular Rajasthan. So that's why Leela Palace has property in Udaipur, and I think and in Jaipur, around the Jaipur they have a lot Exactly. of properties. वो So palace है here ना that उसका news हाँ. that the Jaipur city was not there. That's why, sir, I didn't include that. Okay, okay, But fine. overall, Rajasthan, if you look at Rajasthan, then EIH and Leela Palace has the majority of inventories there. Yes, yes, yes. EH का And तो है also, EH का तो I was sorry go ahead. no, no, sir, the same thing. Like because that properties are of different type, like resorts and palace type. So that's why their ARR is quite at higher end. Fine. Correct. Uh, Rishikesh? Yes. I have Yes. written a news article from page number 8, Financial Express Delhi. Sir, can you scroll down? Financial Express Delhi. I think I don't have अच्छा ये दिल्ली नहीं है मेरे पास this is the Mumbai part. ठीक है, go ahead. Go ahead. Okay. Sir, M&A, Mahindra and Mahindra will have positive growth due to new IQ platform, which is expected to launch in 2027. NU IQ platform is designed for compact SUVs, which have length from 4 meter to 4.3 meter, with all variants of petrol, diesel, hybrid, and EVs.
This new platform offers a 5-star safety, better suspension, and 15% large luggage capacity than its competition like Seltos, Creta. M&M's passenger vehicle sales have increased 19% year to date for financial 2026, led by SUV and new launched vehicles such as 7XO and 9S. M&M's light commercial vehicle sales had a growth of 17% for a year to date financial 2026, and tractor sales have growth of 23% year to date financial year 2026. Mahindra and Mahindra have positive EBITDA growth of 19% year-to-year basis, up to 5,290 crore for third quarter of financial year 2025. With the PLI scheme, which offers incentive to manufacturers for increased domestic productions, it is expected to doubling its production and its volume. Therefore, Mahindra and Mahindra's market share of 18% is expected to increase in next few years. lot of Mahindra today in the newspapers. अब महिंद्रा Yes, की sir. बात कर रहे हैं. I They said that have also searched for which models they are going to launch, but they have not given data. They are just saying that they are going to launch 5 models. They are not mention any price or any range, etc. about that model. हाँ नहीं वो नहीं देंगे. Petrol, diesel, hybrid, EVs. If you say guys every time EVs hybrid की बात तो हो ही रही है. Every company is talking about hybrid cars. So Sahil was saying that specifically it will move towards hybrid vehicles. Yes, industry will move towards hybrid. And at some point in time, Maruti अगर इतने सारे product launch कर रहा है तो government will give benefit on the hybrid. Definitely. इसी से वो EM2 कम होगा, वो तुम्हारा emission norms कम होंगे. तो I think the transition phase will be like that ना, पेट्रोल IC vehicle से लेकर फिर हाइब्रिड से फिर next directly EV. I think this will be the Yes. direction. Actually वैसे ही जाना चाहिए था. ये EVs अचानक से आ गया इंडिया में because of the Western world. Tesla आ गया ना. हाँ, ईवी का तो है ही competition. नहीं इंडिया में. सीएनजी नहीं है इंडिया में, मिलता नहीं है बराबर से. ईवी की क्या बात करते हैं. सीएनजी भरने को तुम जाओ कभी 10 मिनट लगता है ना भरने को सीएनजी. सी द लाइन ऑन द सीएनजी पेट्रोल पंप. इंडिया इज अ पॉपुलेटेड कंट्री. यहाँ पे ट्रांजिशन शुड हैव बीन पेट्रोल, सीएनजी, अल्टरनेट फ्यूल, उसके बाद हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड्स एंड देन इलेक्ट्रिक. दिस शुड बी द. प्लग इन हाइब्रिड्स भी ऐसा है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड पेट्रोल. जिनको प्योर ईवी चाहिए वो सिर्फ उसमें जाए. ट्रांजिशन डायरेक्टली ईवी में हो गया. तो ये अभी हाइब्रिड अभी वापस आ रहा है. मतलब वी आर गोइंग वन स्टेप बैक. तो अपने होंडा ने भी किया है कमेंट. होंडा हैज आल्सो कमेंटेड दे विल हैव एन हाइब्रिड व्हीकल. मारुति तो है ही. टाटा ये जो तुम्हारे वो जो है GSW इज आल्सो लॉन्चिंग कार्स इन इंडिया विद MG. G-Tour, इसका yeah. पार्टनर जी टूर. हाँ जी टूर दैट इज आल्सो एन हाइब्रिड पार्ट. आज अभी ये जो डस्टर का आया लॉन्च, उसने भी बोला 1.8 लीटर का हाइब्रिड व्हीकल दे आर लॉन्चिंग. डस्टर ने भी बोला है. काफी लो प्राइस पॉइंट में लॉन्च कर रहे हैं. JSW तो 15 लाख के अंदर लॉन्च करने के लिए रेडी है. हाँ बोल रहे वही चाइना के है ना, चाइना से आ रहा है उसका प्रोडक्ट. हाँ, हाउ इट डिस्टर्ब्स द मार्केट. पीपल को इतना कॉन्फिडेंस है क्या उसमें. ओके गाइस, इट्स ऑलरेडी लेट. थैंक यू एवरीवन. विल सी यू टुमारो सेम टाइम. Thank you, sir. Thank you. Thank you, thank sir. you, थैंक sir. यू Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.